Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So as I told you कि मैं क्विनोआ की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी for weight loss. So here I am with an amazing and delicious recipe of quinoa for weight loss. सबसे पहले I am making this video in hurry, so please ignore my face, hair and all. So quinoa के benefits पहले मैं बता देती हूँ आपको. Like if you're vegetarian and you are trying to lose your weight with protein intake, then please must add quinoa in your diet because quinoa is rich in protein and fiber. Like 1 cup cooked quinoa में 8 grams of protein होता है and 5 grams of fiber होता है. Like मुझे लगता है कि सिर्फ इसके benefits हैं, disadvantage I don't think इसके हैं. एंड ये बहुत ज़्यादा कार्ब्स में बहुत हाई भी नहीं होता जिससे आप अपनी स्ट्रिक्ट डाइट में ऐड ना कर पाओ. सो एंड हमारे मेटाबॉलिज्म का जो उसको बहुत अप करता है. हमारी लाइक जो फूड क्रेविंग्स होती है उनको बहुत लाइक कंट्रोल करता है. लाइक ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम कोई स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं तो हमारी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है. तो उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है एंड हमें हमारा जो टमी है उसको बहुत फुल रखता है फॉर लॉन्गर टाइम. बहुत ज़्यादा देर तक लाइक हमें भूख नहीं लगने देता है. एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर PCOD पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स एंड शुगर पेशेंट्स. अगर आप कोई भी डाइट में अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, लाइक लास्ट जो मैंने डाइट फॉलो की थी उसमें ये लाइक मेन मील था ब्रेकफास्ट का, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लाइक लेवल का वेट लॉस देगा आप अगर वो डाइट फॉलो करते हैं एंड ये क्विनोआ की रेसिपी आप उसमें ऐड करते हैं तो. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी. सबसे पहले आई एम यूजिंग ऑर्गेनिक इंडिया का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक क्विनोआ. एंड सबसे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा इसका, वो सबसे पहले हम इसको क्विनोआ को बॉईल करेंगे. लाइक एज यू कैन सी कि ये पूरा बॉईल हो रहा है. ये 1 कप क्विनोआ है एंड मैंने इसको पानी में ओवरनाइट सोक करके रखा था. देन अगेन हम इसको बॉईल करेंगे. नाउ अभी ये पानी थोड़ा सा रह गया है तो अब हम इसको लाइक गैस को सिम करके हम इसको कवर करके रखेंगे फॉर 15 मिनट्स. 15 टू. नाउ एक साइड दूसरी पैन में मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है, लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है. एंड देन मैं इसमें हाफ स्पून राई मिक्स करूंगी. एंड देन मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड गार्लिक. एंड देन मैं डालूंगी चॉप्ड अनियंस. मिक्स इट वेल. टर्न ऑफ फ्लेम ऑन हाई. नाउ आई एम एडिंग चॉप्ड कैप्सिकम. And then I am adding chopped tomatoes. Leave it for 1 minute. Now I am adding half spoon salt according to your taste, red chili powder, turmeric powder and coriander. Mix it well. देन ये हमारा क्विनोआ है जो बॉईल प्रॉपरली हो चुका है. एंड अब हम उस स्टफिंग में इसको मिक्स करेंगे. Last में add some chopped coriander leaves. Mix it well and it's ready.